Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Now today we are starting with our next class of the thermodynamics. Already we discussed their work done in their three processes. Four process we are doing in our thermodynamics. First your isothermal, then your adiabatic, then isochoric and your isobaric process. तो चार प्रोसेस हमने डिस्कस की थी. इन चार में से बेटा तीन का हमने वर्क डन फाइंड कर चुके हैं. देन isothermal process work done will be there 2.303 log RT log there in your first one. Work done equal to your 2.303 RT log there V2 by V1. This one work done in our isothermal process. Isothermal में हमने डिस्कस किया था. नेक्स्ट भी डिस्कस्ड देयर आइसोकोरिक प्रोसेस. बेटा आइसोकोरिक के अंदर हमने डिस्कस किया था एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो वर्क डन क्या आता है आपका, जीरो आता है. नाउ थर्ड वन प्रोसेस योर आइसोबारिक. आइसोबारिक के अंदर वर्क डन क्या आता है, W इक्वल टू PV. नाउ योर फोर्थ वन प्रोसेस टुडे वी विल डू आइडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे. तो आइडियाबैटिक प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, आइडियाबैटिक प्रोसेस इन विच योर हीट विल बी रिमेन कांस्टेंट. वी कैन राइट देयर Q लेटर फॉर हीट. हीट विल रिमेन कांस्टेंट, remain constant. That is known as your adiabatic process. In this one heat, then wall should be completely insulated. Wall should be completely insulated. जिसके अंदर आपका सिस्टम क्या रहता है, अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है. तो सिस्टम के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है बेटा वो कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए. देन वी कैन से सिस्टम आवर आइडियाबैटिक. एंड नेक्स्ट वन दैट प्रोसेस ऑफ आइडियाबैटिक हियर विल बी फास्ट. कैसी प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की, एनर्जी की चेंज होने की प्रोसेस क्या है, एक फास्ट प्रोसेस है. हमने आइसोकोरिक किया था, इसके अंदर पढ़ा था बेटा ये दैट इज प्रोसेस इज वेरी स्लो प्रोसेस एंड देयर वॉल कैन बी कंडक्टिंग वॉल. हीट कैन बी पास फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम. बट इन आइडियाबैटिक के अंदर क्या होती है, वॉल कैसी होनी चाहिए आपकी, परफेक्टली इंसुलेटिंग होनी चाहिए. हीट का ट्रांसफर ना हो. फॉर एग्जाम्पल जब हम पानी की गर्म बोतल में कहते हैं कि दैट गर्म पानी की बोतल में डाल दो, इट विल बी रिमेन योर हॉट ओनली. दैट वाटर क्या रहेगा, गर्म ही रहेगा. तो उसका रीजन क्या होता है बेटा, उसके चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, इंसुलेटेड पैक होती है, ताकि पानी क्या है अंदर का गर्म रहे, सराउंडिंग से उसका कोई भी कॉन्टेक्ट ना हो पाए. हीट का एक्सचेंज ही नहीं होगा तो क्या होगा, पानी ठंडा ही नहीं होगा. तो क्या होता है, दैट वॉल ऑफ दैट कंटेनर इज योर परफेक्टली आइडियाबैटिक वॉल. इंसुलेटेड वॉल होती है जिसकी वजह से क्या आता है, हीट का कंडक्ट ही नहीं हो पाता. और जब ये होती है, ये प्रोसेस कैसी होती है, फास्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल टायर से हवा निकलना, गाड़ी चल रही है, चलते चलते पंचर हो गया, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि उसकी हवा निकलना एक फास्ट प्रोसेस है. तो ये किसका एग्जाम्पल है, आइडियाबैटिक का प्रोसेस का. ओके, कोई भी प्रोसेस क्या होती है, एकदम से जो प्रोसेस होगी, फास्ट जो प्रोसेस होगी, दैट वी विल कॉल इट आइडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड देयर वर्क डन इन योर आइडियाबैटिक प्रोसेस. के अंदर वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे. सो एज वी नो अबाउट दिस वन बेटा, कंसीडर अ insulating system in which initially pressure we are taking is P1 and there V1. Okay, then after that finally pressure and volume becomes P2 and V2. Okay, this one your pressure and volume P2 and V2. Now as we know that small work done in adiabatic process beta. So we discussed already your work done equal to
as we know, W equal to small work done, we can write there PdV. How we are writing there, discuss already. Again I can tell you beta, work done equal to here force into small displacement. In form of the pressure we can write there pressure equal to force per unit area. So here force we can write there pressure into your area into this one we can write there V. So your work done will be convert in form of the pressure and volume. वर्क डन क्या होता है आपका, कितना डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना डिस्प्लेस कर रही है बॉडी, दैट इज वर्क डन ओनली. तो अगर प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये वर्क डन क्या हो जाता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. लाइक दिस वन फॉर्म वी कैन कन्वर्ट दिस वन. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. नाउ फॉर adiabatic change, for adiabatic change we know about this one, PV gamma equal to your constant. ये हमें पता है. ओके, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट. आइडियाबैटिक के अंदर बेटा ये गामा एक क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जो कि क्या होता है, सीपी बाई सीवी. What is Cp by Cv? Specific heat at constant pressure to the specific at constant volume. Ratio of this specific heat is known as the gamma. Its value is always more than 1. जिसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है. जिसकी वजह से हमने डिस्कस किया था बेटा, ग्राफ जो बनता है adiabatic कर्व का, that will be more stiffer as compared to the isothermal process. Okay, so that's why from here we can write there P is equal to K by V gamma. तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे. प्रेशर we can write there K by V gamma. So here we can write there this one we are writing with the first equation, this one your second equation. So now put value of P in equation फर्स्ट. यहां से क्या है, P की वैल्यू इधर से निकाल के कहां पुट कर देंगे, दिस इज द प्रेशर एंड पुट देयर प्रेशर इन फॉर्म ऑफ द वर्क डन. ओके, सो वी कैन राइट देयर वर्क डन. सो वर्क डन वी कैन राइट देयर W इक्वल टू from here beta we will find their pressure, then we will put the value of their, then work done will be come out. So how we will find their P? By using this one beta, here we are writing there P equal to here P equal to K by V gamma. This one our pressure. Then after this one we will find there, here this one equation, here first one equation, this our second equation. So we are writing there. Now put value of P in equation first. Okay, so from here we are taking out the value of P, then we will keep here, then work done we can write there W equal to here K V gamma dV. Okay, now after this one, here K is our constant, then constant we can take out. So after this one, here K, here left V gamma dV. Now for find out the total volume of this one, then take integration on both sides. Taking integration
integration on both sides, then we can write there dw equal to k dv v gamma. Okay, taking integration from both sides, initially volume will be work done will be 0, then in that case volume equal to v1. Now here work done will be w, volume will be v2. Okay, now here from here we can take integration, then work done will be w only after the putting limit, final minus initial, final value of work done is w only, and initial value of the work done is equal to 0 only. So equal to another side is k, here another side k v 1 by v, I think dv k dv v gamma. Okay, so here we can write there this one v initial to final, k we can take outside, here we are putting this one value final minus initial, then w will be there, k outside, so inside left v gamma dv v1 to v2. We will take this one upper side, force all this one, then v minus gamma we can write there dv. How we can take integration of this one x dx, then when we will add in this power, then after adding same we will write there downside, 1 plus 1 2 will be there, downside 2, like this one we are writing there integration, here power na 1 will be there, then 1 plus 1, then downside we will write, if n will be there then n plus 1, downside n plus 1. तो यही रूल हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं बेटा. Then as we will open this integration, minus gamma plus 1 and downside we will write there minus gamma plus 1. पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं, same we will write downside. Like this one we will take our integration, here v1 to v2. Now here this one constant we can write there minus gamma. Now here we can write there this one v1 minus, here this one we can write there 1 minus gamma plus 1 na, so this one we can write there 1 minus gamma, opposite करके लिख दिया, same we will write this one. Okay, so here we can write there w, work done our this one. So as we know for adiabatic process बेटा constant को हम क्या लिख सकते हैं, pv gamma for initial value of this one pressure volume equal to your p2 v2 gamma, our constant only. Clear? And constant क्या आपका RT. Clear? So here we can write there, here this one term we can write there p1 v1 gamma. Constant को हम क्या लिख सकते हैं, p1 v1 gamma. Now first we are putting their initial and final limit, we are putting there work done equal to your k 1 minus gamma, यही है ना, 1 minus gamma, then v1 minus gamma v1 to v2, final minus initial, k 1 minus gamma, then here we can write there v2 1 minus gamma v1 1 minus gamma. Now inside we will write this one 1 by 1 gamma, अंदर क्या के की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, then v1 minus gamma v1 k we are multiply this one 1 minus gamma. Okay, so from here we are writing there beta, see here p1 v1 gamma equal to p2 v2 gamma. Now we will put value of this one k, ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है, so इसलिए हम इस कांस्टेंट को इक्वल पुट करते हुए ये यूज करेंगे. So here we can write there p1 k equal to, आपका क्या आ गया, as we know k equal to your p1 v1 gamma equal to your p2 v2 gamma. Okay, so using this one relation here, use w equal to 1 minus gamma k p2 v2 for second volume 1 minus gamma
put value of k na, then v2 1 minus gamma. Here k for initial value p1 v1, here rt this one. Then here we will write there k v1 1 minus gamma. Okay, gamma left na, gamma here left. So after this one, here we can write there w equal to 1 minus gamma. Then this one relation beta, we will solve this one, base same, then power we can add there. So p2 as it is, then v gamma we are adding this one, then here left p2 v2. Okay, same here p1 as it is, we will solve this one, power gamma, here 1 minus gamma. तो गामा को गामा के साथ क्या करेंगे, बेस अगर सेम है, बेस क्या v1 v1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी. बेस सेम, पावर विल बी add there gamma, here left here 1 only. Okay, p2 v2 minus p1 v1. Now work done in this one, we can write this one work done also in this form. Here work done equal to 1 minus gamma, here p2 v2 minus p1 minus p1 v1 this one. Okay, and we can convert this one in form of the temperature also, as we know by using ideal gas equation for n equal to 1. Then we can write there PV equal to our RT. So this one we can write there for this one, your final volume, final pressure, then we can write there RT2 minus for initial pressure and initial volume, we can write there RT1. R is our constant for final T1 and T2. T1 is initial temperature and T2 will be final, because adiabatic के अंदर क्या होता है बेटा, final can be temperature can be changed. आइसोथर्मल के अंदर क्या लेके चल रहे थे, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है. बट हियर टेम्परेचर कैन बी वेरी, बिकॉज हीट कैन बी कांस्टेंट. हीट क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर वेरी कर जाता है. सो इनिशियली टेम्परेचर वी आर टेकिंग T1 एट योर इनिशियल प्रेशर P1 V1, टेम्परेचर T2 एट योर प्रेशर P2 V2. From here we can write there R common, 1 minus gamma T2 minus T1, that is our total work done in our isothermal change in form of the temperature. So this is work done during adiabatic change. Okay, I hope you understood beta, work done during the adiabatic change. Again I am telling you how we can find this one. Initially we are taking their wall should be completely insulated. We should be keep in mind process of adiabatic should be fast. So initially we are taking volume P1 and V1 pressure, then pressure finally becomes your P2 and V2 at temperature final temperature T2. So small work done in adiabatic, we have to find out how much change in the work done will be take place. So this one work done in isothermal adiabatic, then we can write their pressure into change in volume. Then we will find their pressure in form of the adiabatic change, P equal to K by V gamma. K is our constant. That's why here we will put value of pressure, this one, then K1 minus gamma dV. For find out the total volume, then we will take integration on the both side. After the taking integration from initial to final value, then our finally work done will be equal to this one. Take initial to final, put their limit, then work done will be this one. Then use there this one adiabatic change process PV gamma constant. So here after using this one final minus initial, then K we will keep inside. इस K को bracket के अंदर डालेंगे, दोनों side multiply करेंगे, then we will put the value of K. After putting then our this one isothermal work done, adiabatic work done will be there in form of the temperature R by 1 minus gamma T2 minus
T1. So beta, we discussed completely work done during all four process of the thermodynamics. Then in next class we will discuss beta first law of the thermodynamics, how we can do this one. Okay, I hope you understood beta. Thank you for watching today our video.